ओके, लेट मी स्टार्ट। जैसे कि मैंने इससे पहले भी मैंने बोला कहा है, जब मैंने एन की बात की थी तो वो गाउस मैप था। जब मैंने कहा था गाउस ने शुरुआत में कर्वेचर के बारे में कैसे सोचा था। अब हम सारे आइडियाज को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो हमारा प्रिंसिपल कर्वेचर है और ये जो गाउस मैप है, इन दोनों आइडियाज कनेक्ट कहाँ पे होते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी हैव है व्हाट इज सरफेस, ठीक है। तो हर पॉइंट पे अगर ये रेगुलर सरफेस है, एक सरफेस नॉर्मल है, यूनिट वेक्टर। सो यहाँ पर भी होगा, और बाय दैट आई मीन इट इज बेसिकली जो उस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन है, ये उसका एक परपेंडिकुलर वेक्टर है। यहाँ पर अपना एक टेंजेंट प्लेन है, यहाँ पे अपना एक टेंजेंट प्लेन है, उसको अपने अपने वेक्टर परपेंडिकुलर है जिनकी लेंथ 1 है। सो व्हाट वी डू, I can think of this as if this point P हर पॉइंट के लिए एक नॉर्मल है, यानी हर जो पॉइंट है सरफेस पे P, बिकॉज ये भी एक वेक्टर है ना, तो क्योंकि ये रहता है अपना 3 डायमेंशनल स्पेस में, हर कोई पॉइंट जो यहाँ पे P है which lies on this surface can be mapped via this map to its surface normal which lies on the unit sphere। मेरे कहने का मतलब ये जो सरफेस S है, इसके हर पॉइंट को मैप हम कर सकते हैं वाया दिस मैप टू इट्स सरफेस नॉर्मल। जैसे ये वाला यहाँ जाएगा, इसी तरह से कोई और सरफेस नॉर्मल, वहां पे वो पॉइंट हम मैप करेंगे, यानी n को हम एज अ मैप सोच सकते हैं, and which takes a point on the surface to a point on the S2 unit sphere, right? So let me write इसकी definition. Gauss map is a function n, इसको हम n से डिनोट करेंगे। फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम करेंगे n at p, है ना, बिकॉज यहाँ पे हमने पॉइंट किया p के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा हमें S2 पे। तो Gauss map is a function n from a surface, let's call it S in R3 to the unit sphere in R3, जिसको हम usually denote करते हैं S2 that also lives inside R3. It associates to each point on the surface its unit normal vector। अब हमें पता है अगर मेरे पास कोई मैप है n से, you know, from S to S2, so then I can think of, you know, this, you know, I can think of it, इसका जो differential है dn, now basically it takes a point P, right, which lies on this tangent plane, यानी बिना tangent plane के L का तस्वुर नहीं है ना। और कभी कभी हम उसको कहते हैं टेंजेंट स्पेस इन जनरल, बिकॉज वी कैन गिव इट अ वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर। देखो, जब मैं कह रहा हूँ टेंजेंट प्लेन, इट इज नॉट द सेम एज R2, इट्स अ कॉपी ऑफ R2। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम मानते हैं एज इफ P की जगह ओरिजिन है, तो फिर यहाँ RU होगा, यहाँ RV होगा। आई कैन थिंक ऑफ इट एज अ कॉपी ऑफ R2। कभी कभी हम फिर उसको लिखते हैं R2P, सो इट हैज अ वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर, तो हम इसको टेंजेंट स्पेस भी कभी कभी कहते हैं। अब ये टेंजेंट स्पेस पे एक्ट करता है। अब जो डिफरेंशियल है किसी पॉइंट पे हो, उसका डिफरेंशियल, वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंशियल एज अ मैप एक्टिंग एट ऑन द इंक्रीमेंट्स DUT। मेरे कहने का मतलब है मैं सोच सकता हूँ दिस डिफरेंशियल ऑफ अ मैप, अगर मेरे पास ये एक फंक्शन है फ्रॉम S to S, राइट, then I can think of its
Now of course p r जो है अपना वो n जो है it is a function of uv because r is a function of uv. Let me मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, r is a function of uv and n is basically r sub u cross r sub v divided by the its length. इसका मतलब अगर मैं इसको मैप सोच रहा हूँ so n is a function of n of u. Of course मैं यहाँ पे पॉइंट को फिक्स कर रहा हूँ and at a point it depends upon the u and v, right? Right. So then अगर इस तरह की कोई फंक्शन हो, basically this is a function from r2 to ऑफ कोर्स यहाँ पर भी ये फंक्शन ऑफ u भी होगा, मतलब r2 नहीं एग्जैक्टली बट बेसिकली मुझे कहना चाहिए r2 एट p, यानी the tangent space at p, the tangent plane at p. So 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 this is a map from ru to of course uv ru में रहते हैं, right? So what does that mean? That means basically the np at it would be a function on the increments of u and v. मेरे कहने का मतलब है इससे पहले भी हम जब करते थे ना f is a function of fx fy, तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम कहते हैं df को हम सोच सकते हैं it is del f by del u du plus del f by del v dv. इसको हम सोच सकते हैं as a map df को that acts like this, मतलब इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में अगर ले लूं so df can be then thought of at as a function acting on dv via this form, and it is df by du comma df by dv into du dv. ये हम कर चुके हैं, and a derivative can be thought of as a linear map on the increments. So similarly this differential of the Gauss map can be considered as a map on the tangent space here to basically two tangent space here and increments here to increments here, which are essentially same because they would be parallel, because they would be perpendicular to this n, and n would have the same direction. So वही मैं words में लिखूंगा, since the tangent space at a point p on m is parallel to the tangent space at its image point on S2, dn can be thought, can be considered as a map, as a मैं लिख सकता हूँ linear, तो ये होता ही है, differential is a linear map, as a map of the tangent space at p into itself. Okay. Now, so now what we do is like this. Now dn at p, whatever it is certainly, we know that it is nu du at a point, मतलब जो भी point होगा, मतलब that जो भी point under consideration होगा, it can be written in this form. So basically I can think of it acting upon the increments du d. ठीक है? Now this is equal to this thing. Of course यहाँ mention नहीं कर सकते at point p and increments du dv, वो basically मैं क्या कह रहा हूँ कि dn is a map sort of an r2 to r2, not exactly r2, but we can say pair of numbers. So
So that acts like dn as a matrix is equal to n sub u n sub v applied to the vector dut. I think हमने वो किया था जब कैलकुलस मल्टीवेरिएट में इस तरह से होता है. एक्चुअली ज्यादा जनरल हमने लिया था m क्रॉस n मैट्रिक्स, right? So this is what we get. So but ऐसे करेंगे, we want to write it in terms of r and r because we are thinking of it lying inside the tangent plane. We can do that, but from Weingarten equations, h square into n sub u can be written as fm minus gl times r sub u plus fl minus em times r sub v, and h square into n sub v can be written as fn minus gm times r sub u plus fm minus en times r sub v. So that h square into dn sub v at a point applied to the increment as a map du dv should be basically h square n sub u du plus h square n sub v dv, which can be written as h square into fm minus gl times r sub u plus okay, fl minus em times r sub v whole multiplied by du plus h, मैंने क्या लिखा h2 wrong है, it is h square. h square into I would have h square मैं हटा सकता हूँ क्योंकि h square into nu is equal to this, तो यहाँ h square लिखने की जरूरत नहीं. So plus आएगा मेरे पास, so this would be what, fn minus gm r sub u plus fm minus en r sub v. Of course this is multiplied by I think d. ठीक है? So that I can write as, in terms of basis अगर मैं जाऊँ, it would be fm minus gl, फिर से fm minus gl du plus fn minus gm times dv whole multiplied by r sub u plus rb वाले, so it would be fl minus em times du plus what do I have, fm minus en times dv whole multiplied by r. I choose to write it like, यानी मान लो ये मेरा basis है, this is like e1 e2, तो अगर कोई basis already पता हो, you can usually write it as a pair, यानी तुम लिख सकते हो इसको as a pair, as a vector, यानी इसको तुम लिख सकते हो fm minus gl times du plus, as long as basis is clear कौन सी है, we can just do this, plus fl minus em du plus fm minus en times d. मतलब एज अ पेयर हम लिख सकते हैं, कॉमा रख सकते हैं, जैसे कि हम 2 3 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1 बेसिस एलिमेंट प्लस 3 टाइम्स, बिल्कुल वही, यहाँ पे उसकी जगह आर एन आर की बेसिस, यानी dnp is equal to 1 by h square into the vector, था into this vector,
but I can write this vector as the matrix Fm. Let me write it. मैं थोड़ा सा फिर से लूंगा. Pn p को कोई मतलब चलो p ही मैं लिखता हूँ. Applied to du dv can be thought of 1 by h square as a matrix. ये बन जाएगा Fm minus gl Fn minus gm Fl minus em Fm minus en applied to du dv. Basically as a map dn p की जगह मैं दे सकता हूँ इसके parameters because we would evaluate these numbers. This differential of Gauss map as a linear map is represented by this matrix at a point p. At a point p, which of course depends upon the parameters. उन parameter values पे हमें निकालना है इस matrix के value. So there would be some numbers. So Fl minus Em Fm minus En. ये जो ये matrix है ये represent करती है the linear map of which represents the differential of the Gauss map at a certain point. Of course applied to then increments because जो ये linear map होता है differential का it applies on changes in u and v, the parameters. So ये है अपना differential the Gauss map. Now this is clearly related to our what we call, but this can be interestingly also written as. Now this can also be written as to h square को now this is also equal to product of two matrices EF FG का inverse multiplied by LMNN. अगर हम ये evaluate करें we will get this, and remember that h square is equal to g minus h square. वो remember करोगे तो दोनों को multiply करोगे to get this matrix. Anyways, so that was differential of the Gauss map. Now how is it related to the principal curvatures? तो पहले तो ये है कि अगर हम इसके आइगन वैल्यूज होंगे कि आइगन वैल्यूज अगर हम लेंगे, now if alpha 1 alpha 2 are the eigenvalues of the operator dn, which is a linear operator from R2 to R2, we get alpha 1 plus alpha 2 किसके बराबर होता है? So sum of the eigenvalues is always equal to the traced. So that is equal to 1 by h square into Fm minus GL. यहाँ GL है, sorry. यहाँ GL मैंने लिखा था. Minus GL plus Fm minus En, right? मैंने क्या किया? Traced अगर हम लेंगे तो वो बन जाएगा 1 by h square into Fm minus GL plus Fm minus En, which is basically minus 1 by h square into En minus twice Fm plus Gn, right? And if you remember, this is nothing but minus k sub a plus k sub b. If you remember, it is actually the negative of the sum, जो eigenvalues का इस matrix का sum है, इस operator का, it is nothing but the negative of the sum of the क्या बोलते हैं principal curvatures. इसीलिए कभी कभी हम इस operator की बात करते हैं, हम बजाय minus d np के np लेते हैं, माइनस डी एनपी लेते हैं, इसको कभी हम कहते हैं टी एस, तो कहते हैं इसको शेप ऑपरेटर.
तो देन फिर आसानी ये हो जाती है, देन 1080s के जो आइगन वैल्यूज होंगे इस ऑपरेटर के होंगे एग्जैक्टली जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज होगा दैट विल बी इक्वल टू the sum of the principal curvatures. And of course, not only that, alpha 1, alpha 2 product मैंने क्या लिखा, इनका प्रोडक्ट होगा डिटर्मिनेंट, so that would be determinant of this matrix जो भी था. So वो इवेलुएट अगर मैं करूं so वो बन जाएगा f square m square minus fm en मल्टीप्लाई करके minus gl fm plus engl divided by h raised by 4, क्योंकि h square है तो वो दोनों रोज के साथ है, जो डिटर्मिनेंट में वो ट्वाइस आ जाएगा. ठीक है, हम मतलब पहले उसको अंदर ले जाएंगे, तो यहाँ भी एच स्क्वायर पे जो मल्टीप्लाई करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, तो वो आ जाएगा एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, वो h4 का फैक्टर आ जाएगा. एंड दैट वुड बी इक्वल टू f स्क्वायर इंटू m स्क्वायर माइनस ln माइनस eg इंटू m स्क्वायर माइनस ln divided by h4. So वो होगा m square minus ln into f square minus eg divided by h square. वो होगा ln, let me write it, ln minus m square into h square divided by h4. वो होगा ln minus m square divided by h square. That is nothing but k sub a, k sub b, but we would like to write it as minus k sub a into minus k sub b. तो इसका जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होगा that would be the product of negatives of the principal curvatures. Now it is sometimes desirable, चलो मैं लिख ही देता हूँ, it is sometimes desirable to consider the linear map SP equal to minus DNP at a certain point called the shape operator. तो उसमें कुछ नहीं, ये माइनस माइनस का चक्कर खत्म हो जाता है. ओके, सो नाउ अब जो हम कल करेंगे वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ दिस DN, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस DN इज ना शेप ऑपरेटर. अभी तक हमें एक प्रॉपर्टी तो पता चली गई, वो तो ऑब्वियस था, वो था लीनियर ऑपरेटर. और लीनियर ऑपरेटर नहीं, हमें ये भी पता चला वी कैन एसोसिएट अ मैट्रिक्स टू इट which is given by first and second order fundamental magnitudes. So with this operator, I can associate a matrix, which we can always do with a linear operator. We can associate with it a matrix that comes from first and second order fundamental magnitudes via this formula. Nice form. So कल हम इसके कुछ और प्रॉपर्टीज, अभी तो हमने कहा लीनियर है, हम दिखाएंगे ये सेल्फ एडजॉइंट भी, और सेल्फ एडजॉइंट भी हम कल वहीं पे डिफाइन करेंगे. So let me end it here.